A very good morning, dear students. Today we will be starting a new chapter, Animal Life Reproduction in Animals. In this chapter, we will understand how animals reproduce by laying eggs, giving birth. Life cycle of frog, butterfly, grasshopper. Importance of reproduction in animals. So let's start. Have you wondered how the young ones of all these come into the world? How are they born? क्या कभी आपने सोचा है कि इन सारे एनिमल्स के बेबीज कहाँ से आते हैं वर्ल्ड में, कैसे ये बॉर्न होते हैं, राइट? सो इन दिस चैप्टर वी विल कम टू लर्न अबाउट दिस. The process by which living beings produce another one of their own kind is called reproduction. Every living being has the ability to give birth to one of its own kind. In this way, the cycle of life keeps moving. If they fail to reproduce their own kind, their form will disappear from earth. Thus, reproduction is an important process for every animal to continue its race. वो प्रोसेस जिससे लिविंग बींग्स अपनी ही तरह के लिविंग बींग्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, that process is called as reproduction. Reproduction क्या प्रोसेस है? अपने ही तरह के लिविंग बींग्स को बर्थ देना. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनका जो वो लिविंग बींग है उसका काइंड अर्थ के ऊपर ख़त्म हो जाएगा. इसलिए रिप्रोडक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है. लाइक आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल. डॉग का बेबी इज़ पपी हुआ, वो बड़ा हो गया, अडल्ट हुआ, डॉग बन गया. फिर उसने बेबी दिया, एक नया पपी आया, राइट? अगर वो बेबी नहीं देगा तो क्या होगा? एक टाइम के बाद सारे डॉग्स ख़त्म हो जाएंगे. सो लिविंग बींग्स को अपने ही काइंड के, अपने ही तरह के अपनी काइंड को प्रोड्यूस करना होता है ताकि उनका जो रेस है एज इट इज़ अर्थ के ऊपर चलता रहे. हाउ डू एनिमल्स रिप्रोड्यूस? Animals reproduce by two ways. Number one is by laying eggs. Number two is by giving birth to young ones. Animals that lay eggs and hatch them are called oviparous. Like animals जो है वो दो तरह से reproduce होते हैं. एक eggs देकर, दूसरा young ones को birth देकर. वो एनिमल्स जो ले करते हैं एग्स, लाइक बर्ड, स्नेक्स, क्रोकोडाइल, उनको ओविपेरस कहते हैं, राइट? लाइक बर्ड्स, फिश, इंसेक्ट्स, फ्रॉग, स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल, दे ले एग्स. नाउ birds make nests to lay their eggs. The female bird then sits on them for many days to keep them warm before these eggs hatch into young ones. जो बर्ड्स हैं वो अपना नेस्ट बनाती हैं, उसमें एग्स देती हैं. फीमेल बर्ड कई दिनों तक उनके ऊपर बैठती हैं, उनको वार्म रखती हैं, और जब वो हैच करते हैं एग्स तो बेबी बर्ड बाहर आती है. Now we will be moving to life cycle of a bird. All eggs are protected by a head cover called the shell. Within the shell is the albumen, white part, and the yolk, yellow. The albumen protects the growing young bird, and the yolk is its food. The young birds will only develop if the egg is kept warm. The eggs hatch and the young ones that come out have no feathers on their bodies.
The mother feeds the young birds till they are ready to fly away. जो एग्स हैं उसको प्रोटेक्ट करती है शेल, हेड कवर, दैट इज कॉल्ड एज शेल. शेल के अंदर एल्ब्यूमिन पार्ट होता है, वाइट पार्ट, जो बर्ड को, बेबी बर्ड को प्रोटेक्ट करती है, और येलो पार्ट इज योक, जो उसका फूड होता है. जब आपका एग हैच करता है ये, और उसमें से बेबी बर्ड बाहर आती है, तो उसके कोई फेदर्स नहीं होते, इट इज़ नॉट एबल टू फ्लाई. तो तब तक मदर उसको फीड करती है जब तक कि it is not ready to fly. Insects. All insects lay eggs. Grasshoppers and cockroaches have 3 stages in their life cycle. Butterflies and mosquitoes have 4 stages in their life cycle. The young ones that hatch out of the egg look very different from their adults. During their growth, they keep changing their appearance by shedding their skin. The shedding of the old skin is called molting. So, सभी insects eggs देते हैं, right? Grasshopper और cockroaches हैं, उनकी लाइफ में 3 stages होते हैं, जबकि butterflies और mosquitoes जो होते हैं वो 4 stages को follow करते हैं. जो यंग बेबी है वो एग के अंदर से बाहर आता है, जो बिल्कुल भी अडल्ट से जब बड़ा हो जाता है, जैसे मस्कीटोज या बटरफ्लाई या ग्रास हॉपर, उससे मेल नहीं खाता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है. अपनी ग्रोथ के दौरान कई बार वो अपनी ओल्ड स्किन को शेड करता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज molting. Here comes the life cycle of a grasshopper. Grasshopper lay eggs that hatch into small babies called nymphs. The nymph is much smaller than the adult. As it grows, it sheds its skins and develops wings. After this, it becomes an adult. ग्रासहॉपर जो है वो एग्स देता है, जो हैच कर जाते हैं, उसमें से स्मॉल बेबीज निकलते हैं जिनको कहते हैं निम्फ. निम्फ जो है वो स्मॉल होते हैं एडल्ट से. जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं वो अपनी स्किन को शेड करते हैं और डेवलप करते हैं विंग्स में, राइट. तो ग्रासहॉपर के 3 स्टेजेस हैं, एग, देन निम्फ, देन अडल्ट. लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई. द एग्स ऑफ अ बटरफ्लाई hatch into small worms. This worm is called larva. This larva of a butterfly is called a caterpillar, and that of a housefly a maggot. The caterpillar feeds on green leaves greedily and becomes very plump and sluggish. The caterpillar now protects itself in a shell called cocoon. This stage is called pupa, when the larva inside the cocoon grows slowly. In a few weeks, the pupa splits open and an adult butterfly comes out. The whole process of this change in form is called मेटामॉर्फोसिस. जो बटरफ्लाई का एग है जो वो हैच करता है, उसमें से एक स्मॉल वर्म निकलता है, वो लार्वा कहलाता है. बटरफ्लाई का लार्वा इज कॉल्ड एज कैटरपिलर और हाउसफ्लाई का मैगॉट. अभी जो कैटरपिलर होता है ये बहुत सारी ग्रीन लीव्स को खाता है और बहुत प्लम्पी और स्लगिश बन जाता है, लेजी बन जाता है. इसके बाद कैटरपिलर क्या करता है, अपने चारों तरफ एक शेल बनाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज कोकून, और इस स्टेज को कहते हैं प्यूपा. कोकून के अंदर जो लार्वा है वो ग्रो करता है, और कुछ हफ्तों के बाद जब ये कोकून स्प्लिट कर जाता है तो उसमें से बहुत सुंदर ब्यूटीफुल बटरफ्लाई कम्स आउट. ये जो 4 स्टेजेस आती हैं बटरफ्लाई की लाइफ में, दीज आर कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस. जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बटरफ्लाई चेंज होती है, दिस इज कॉल्ड एज metamorphosis. Here is the life cycle of a butterfly. That's all for today. Thank you. Have a great day ahead.